Hi Menka. Good morning. Hi Jyoti. Thank you Ria for confirming. Hi Samvedna. Hi Tamanna. Haji, I had breakfast. Not during. Same thing. उसको भी सिखाती हूँ ऐसे टिप्स. हाँ निष्ठा, that I make. वो परांठी बनानी is easy. वो स्क्वायर होता है. राउंड बनाना is difficult. Oh, nice Jyoti. I mean, blessed. You are blessed, I would say. अच्छा, YouTube में तो सबको शेफ बना दिया है, no doubt. Me too, follow YouTube only for cooking and all. Right, that's worth watching, Keshav, no doubt. Yeah, यही होता है ज्योति. This happens. Earlier, I only knew before COVID. I only knew how to make tea. So मैं चाय बहुत शिद्दत से बनाती थी, as in 15-20 मिनट लगा के. So everybody used to wait for my tea, as in कि हाँ बहुत अच्छी चाय, बहुत अच्छी, क्योंकि वही आता था ना. और उसके अंदर तो फिर मैंने पूरा वो अपना as in टाइम लगा के प्रॉपर वाटर कब बॉईल हो रहा है, मिल्क कब ऐड करना, whatever प्रॉपर स्टेप्स होते थे one by one. Now when I have learned cooking and all, तो अब अगर मेरे हाथ की कोई चाय पी ली तो वो पता चलता है ये 5 मिनट वाली है. 5 seconds में my tea is ready. राइट रिया, मैंने तो यही मतलब जब करना पड़ा तभी आई हैव लर्न, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं था कुकिंग का. हाँ सतीश, आई थिंक दिस फीलिंग ये हमारी फीलिंग जो है ये कौन आपको सस्ती है. सेम पैराग्राफ इन हम करे थे. हाँ जी विवेक, आई थिंक द फीलिंग वाज रिलेटेबल. आई थिंक एवरीवन एंजॉयड. यस, बिल्कुल yesterday I have. Oh nice. चलिए, we talk about food, है ना, foodies. All right, so let's start with the dictation part. Dictation के अंदर we were writing. Last point हम कर रहे थे legal character, right? So legal character को continue करते हैं. Legal character के ऊपर एक sentence we have already written. I'll just repeat that out. So we have written a man's status or legal character is constituted by the attributes which the law attaches to him in his individual and personal capacity. Right. Please write down further, continuing the same paragraph. In its most comprehensive sense, a man's status, in its most comprehensive sense, a man's status includes his whole position in the law. A man's status includes his whole position in the law. The sum total of his legal rights. The sum total of his legal rights, duties, liabilities, or other legal relations. I repeat, in its most comprehensive sense,
A man's status includes his whole position in the law, the sum total of his legal rights, duties, liabilities, or other legal relations. जी. For illustration, as illustration, suit for declaration. For instance, suit for declaration that the will executed by, just giving you illustrations. For example, suit for declaration that the will executed by A, is forged and fabricated. इसके लिए सूट फाइल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, that the will which has been executed by is forged and fabricated. Next illustration, for example, suit for declaration that A is the adoptive father of B, or B is the adoptive son of A, Done? Next, you can just write down, for instance, suits which are not maintainable under section 34. उसकी भी एक दो illustration लिख लीजिए. Suits which are not maintainable under section 34, illustrations. A suit wherein there is no one to deny, the legal character, is not maintainable. Further, a suit where there is no question of legal character, or some proprietary right, or a suit for a declaration, that one person is related to another, Have you written? All right. Fine. Next we write down few case laws. Just a moment. हाँ जी, इसी के अंदर ही आप लिख सकते हैं एक और illustration. A suit
A suit for declaration about the rights arising out of contract. So, a suit for declaration about rights arising out of contract. About rights arising out of contract is not maintainable. Is not maintainable. Further, declaration about pecuniary liability. Declaration about pecuniary liability Declaration about pecuniary liability is outside the ambit of Section 34. Is outside the ambit of Section 34. Done. As observed in Mahabir Jute Mills versus firm. We're continuing, Samvedna. Firm Kedar Mahabir Jute Mills, firm Kedarnath, (1960) Allahabad. BHAROSE. So where we have written, for instance, a declaration या कोई भी एक सूट जो है about rights arising out of contract या declaration about pecuniary liability are not maintainable as observed in this case. As observed in this case. ठीक है? Write down the observation here. This case observation. I hope you are able to follow me. We are writing the suits which are not maintainable और इसके अंदर हम एक केस लिख रहे हैं. ये केस है कि कोई भी right if it is arising out of a contract या कोई भी declaration with respect to pecuniary liability is not maintainable under section 34. केस नंबर ऑब्जर्व हुआ था and इस केस के points लिख लीजिए. It was observed in this case that a suit filed for declaration that the plaintiff is not liable for damages. The plaintiff is not liable for damages. I repeat. It was observed in this case that a suit filed for declaration that the plaintiff is not liable for damages in case of breach of contract and the contract between the parties does not subsist is not maintainable. Okay, I repeat. A suit filed for declaration that plaintiff is not liable to pay for damages in case of breach of contract or the contract between the parties does not subsist is not maintainable as the right must relate to legal character
or property, legal character or property, that's it. राइट हाँ जी इज इट क्लियर टू एवरीवन सो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी आपके राइट्स होते हैं आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि प्लीज डिक्लेयर कर दिया जाए दैट आई हैव नो लायबिलिटी टू पे द अदर पर्सन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं हो सकता है Now we know this thing या हम ये declaration नहीं ले सकते हैं that the contract does not subsist between the parties. Now उसके लिए क्या हमारे पास दूसरे reliefs हैं for example you can go for the cancellation अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर लेफ्ट आउटस्टैंडिंग रहा एज इन अगर उसको ऐसे ही रहने दिया तो वो जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सो यू कैन जस्ट गेट द इंस्ट्रूमेंट कैंसल वॉइड और वॉइडेबल दोनों सिचुएशन के अंदर अगर वॉइडेबल है अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट तो देन यू हैव आल्सो द रिलीफ ऑफ गेटिंग योर कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड रिसेशन भी हो सकती है या फर्दर अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी बाय फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से कुछ रेक्टिफिकेशन की जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो वो वहां पे आप रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं बट सिर्फ आप नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड सेक्शन 34 का पॉइंट ऑफ व्यू सेक्शन 34 के अंदर जब भी हम डिक्लेरेटरी डिक्री के बारे में बात करते हैं दैट मीन्स व्हाट वी आर सेइंग एक प्लेंटिफ अपना एक लीगल स्टेटस एस्टैब्लिश कर सकता है या किसी प्रॉपर्टी में राइट एस्टैब्लिश कर सकता है वो राइट उसके पास ऑलरेडी है ही इज एंजॉयिंग बट ही हैज अ फेयर कि कभी फ्यूचर में जाके या अभी आज के टाइम पे भी देयर इज वन पर्सन हु इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस या वो उस राइट को डिनाई कर रहा है सो ही इज जस्ट री एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट एक तरीके से फर्म एस्टैब्लिशमेंट करना चाहता है उस पर्टिकुलर फैक्ट की अब अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जैसे देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज वन ऑफ द पार्टी हैज कमिटेड अ ब्रीच तो वहां पे दूसरी पार्टी कोर्ट में जाके ये डिक्लेरेशन नहीं ले सकती है कि प्लीज आप डिसाइड कर दीजिए अभी वेदर आई एम एंटाइटल्ड मतलब आप डिक्लेयर कर दो दैट आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू एनी काइंड ऑफ अ पेक्यूनियरी मतलब कॉम्पनसेशन या कोई भी मेरी लायबिलिटी राइज नहीं करती है सो ऐसी declarations are not allowed under section 34 and I hope you're able to get the point done आपको कॉम्पनसेशन मिलनी है या नहीं मिलनी है या वेदर यू आर लायबल टू पे द कॉम्पनसेशन और नॉट ये सब कुछ आप जब सूट फॉर कॉम्पनसेशन फाइल करते हैं तभी डिसाइड होता है या जब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ कॉम्पनसेशन मांगते हैं तो कब तभी कोर्ट डिसाइड करेगा कि यस ब्रीच हुआ है वेदर द पार्टी इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन और नॉट या लायबिलिटी बनती है कॉम्पनसेशन की या नहीं बनती है तो ये सारी चीजें will not be decided under section 34 but obviously when you're claiming other reliefs right okay yes Satish ma'am where it is proven fact A son of B can father throw son out of the property by declaration suit or by publishing in the newspaper like what are you trying to say Satish इस चीज से आप क्या करना चाहते हैं कि आप अगर मतलब कोर्ट से ये मांगना चाहते हैं declaration that I have declared this person like a person who's not entitled to inherit my property आप ऐसी चीज बात करें अगर आप पब्लिकेशन करते हैं न्यूज़पेपर में so this person okay the point is सतीश यहाँ पे आपको first of all डिनाइल है वर्ड जिसके अगेंस्ट आप सूट फाइल करते हैं राइट जिसके अगेंस्ट आप सूट फाइल करते हैं फॉर एग्जांपल इफ अ फादर इज फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट द सन तो सन किसी चीज को डिनाई करे या फ्यूचर में देयर इज एन इशू की आई मीन या वो मतलब आपको लग रहा है कि ही इज इंटरेस्टेड इन डिनाइंग दैट फैक्ट फॉर एग्जांपल एक फादर ने विल बना दी है ठीक तो क्या फादर डिक्लेरेशन ले सकता है कोर्ट से कि यही मेरी लास्ट विल है एंड दीज आर द पर्संस एंड मेरी विल जो है वो मेरे अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट होनी चाहिए एंड अगेंस्ट द सन अगर उसने सूट फाइल कर दिया है कि क्योंकि उसको ये डर है कि ये इसी फैक्ट को डिनाई करेगा तो तब हो सकता है Are you able to get the point, Satish? So you'll have to make out a case, you'll have to make out a situation in order, the court decides in your favor. As in, आपको एक बात वैसी कहनी होगी और आपको साथ में ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक रीजनेबल सर्कमस्टांस है जिससे उसका बेटा फ्यूचर में जाके डिनाई कर सकता है. Are you able to get the point? Let me know. Done? Yes. Definitely. ठीक. All right. Now, before I move further, चलो आपने ये point उठा लिया मैंने डिक्टेशन के अंदर भी करवाना था. Sometimes what happen is plaintiff ने एक सूट फाइल किया for declaration. ठीक
फॉर एग्जाम्पल उस प्लेंटिफ की डेथ हो गई, तो क्या उसके एलआर्स भी उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं? प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया फॉर डिक्लेरेशन, फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ वांट्स टू बी डिक्लेयर्ड एज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो अपने टाइटल को डिक्लेयर करवाना चाहता है कोर्ट से कि मुझे डिक्लेयर कर दो ये ओनरशिप। अगर उस प्लेंटिफ की डेथ होगी तो क्या उसके एलआर्स के भी का इंटरेस्ट भी यही होगा दैट यस उनका फादर जो था ही शुड बी डिक्लेयर एज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, सो दैट जो पर्सन अगर उसके फादर की ओनरशिप को डिनाई कर रहा था, तो जो प्रॉपर्टी एलआर्स इनहेरिट करने वाले हैं, तो दैट मीन्स एलआर्स को भी उसी पर्सन से डर है, सो यस वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल। सो देयरफॉर समटाइम्स क्या होता है कि कॉज ऑफ एक्शन आपका ऐसे होता है दैट दिस इज समथिंग दैट इज नॉट वेरी पर्सनल इन नेचर, और एलआर्स जो है वो उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट जी, इफ राइट टू सूट द राइट्स। Okay, so this is done. Proceeding further. Now we move on to I remember. सिमरन आप मुझे समझ नहीं पाए, इस चीज का गम रहेगा मुझे हमेशा। Okay. All right, so write down the next heading, further relief. Further relief शुरू करवा के ही उसमें I'll dictate few points. All right. Further relief. अच्छा चलो, नवंबर जाए चाहे दिसंबर जाए, एक बात बताइए, आप क्लास के अंदर जो भी पॉइंट सुनते हैं, अगर आपने रिवीजन अभी नहीं की, बट चलो मैं इतना थोड़ा सा गारंटी के साथ कह सकती हूँ, व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन योर बुक्स, आपके लिए कोई भी टॉपिक फ्रेश नहीं होगा, आपको सारा आता होगा। ऑल दैट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू मेमोराइज द केस लॉज को क्रैम करना है, बस यही पार्ट रह जाता है, बिकॉज यू राइट सो मच एंड मोर ओवर बहुत बार रेपिटेशन हो जाती है क्लास में, सो दिस इज रिविजन ओनली। सो इफ यू हैव अटेंडेड लाइक 60-70 लेक्चर्स गए हैं एसआरए के, तो दैट मीन्स यू आर डन विद एसआरए। ऑल दैट यू हैव टू डू इज 2-3 दिन लगेंगे बस, अगर आप रट्टा मारने पे आ जाए तो दैट्स इट। 2-3 दिन के अंदर ऑल दैट यू हैव टू डू इज क्रैम्स केस लॉज, दैट्स इट। हाँ, मैं आई एम टेलिंग यू, राइट। हाँ, ये ऐसे चाहिए होते हैं ना मोटिवेशनल वर्ड्स। Yeah, this was the 60th lecture. बिल्कुल, it's like a bear reading, and if you start reading it like a story book, कि स्टोरी की तरह पढ़ना है, तो आई थिंक 2-3 दिन के अंदर केस लॉज भी सारे याद हो जाएंगे, एंड एसआरए इज डन, ऑलमोस्ट डन। ठीक, बहुत सिंपल लॉ है, बट द पॉइंट इज इसके क्वेश्चंस के अंदर हमेशा थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। आई हैव सीन दिस थिंग दैट प्रोपोजिशन थोड़ी सी अजीब आती है, वो अजीब नहीं होती हैं, वो प्रोपोजिशन बहुत बड़ी होती हैं, और उसके अंदर पॉइंट सिर्फ वो एक पर्सन का होता है कि जो यू जस्ट हैव टू फाइंड इट आउट कि लिखा क्या गया, दैट्स इट, और उसमें कुछ भी नहीं है। ओके, राइट, सो वी वर राइटिंग अबाउट फर्दर रिलीफ। So let's write down the meaning of further relief. Please start writing. The object of the provision. The object of the provision is to prevent multiplicity of suits.
The object of the provision is to prevent multiplicity of suits and where the plaintiff is entitled to any further relief which necessarily flows from the declaration sought, then he must claim the same, and in default thereof, the court will dismiss the suit. The term further relief means relief. Flowing directly and necessarily from the declaration sought and the relief appropriate to and necessarily consequent upon the right or title asserted. I repeat, the term further relief means relief flowing directly and necessarily from the declaration sought and the relief appropriate to and necessarily consequent upon the right or title ascertained. It does not mean every kind of relief. That may possibly be asked. It does not mean every kind of relief that may possibly be asked, but only relief arising from the cause of action on which the plaintiff has instituted suit. Cause of action on which the plaintiff has instituted his suit. Done? Written? Okay, so now let's just do the illustrative cases on further relief. ठीक है, further relief के ऊपर हम case laws कर रहे हैं. Let's just see the situations now. Okay, so write down the first case. This is landmark. This is important as well. Rukma Bai. I'll just write it again. Versus Lala Lakshmi Narayan.
19 Sorry, I forgot to check. Pulke, did you check? This is what you said ना. मैंने check करना ही याद नहीं रहा. अभी I thought. 1959, 1960 please check कर लीजिए. हाँ, this you will check. Please कर लो check. Because even I am in doubt. Please see. बहुत बड़ा होमवर्क है आपके लिए. Please इसको finish कर लेना. Just see it. नहीं, मैं गलत हो सकती हूँ क्योंकि that's what I'm saying. I have not checked it. ठीक है, मेरे नोट्स के अंदर है 59 बट पुलकित इज सेइंग 60 है, तो प्लीज आप इसको चेक कर लें एक बार बिकॉज ये बहुत पुराना है मेरे पास. आई हैव नॉट लाइक चेक्ड इट. रुकमा बाई वर्सेस लाल लक्ष्मी नारायण. लाला लक्ष्मी नारायण, नॉट लाल, सॉरी, लाला लक्ष्मी नारायण. रवनीत डिड यू चेक? ओके, 59 ही आ रहा है. देख लो अभी इफ यू वांट टू हैव लुक. चलो, पता नहीं, मैं अब मेरे नोट्स के अंदर वो पुराना 59 60 तो मुझे याद नहीं है. ये 1960. चलो 59 60 जो याद रहेगा, दोनों सही है. ईयर्स याद रखने बड़े मुश्किल होते हैं. वो कोर्ट का नाम बस याद रहता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है एंड जस्ट कोटेड. वैसे नंबर मिल जाते हैं इवन इफ यू मिस द ईयर कई बार, अगर वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है. ओके, साइटेशन का फर्क होगा. कई बार रिपोर्टिंग 1959 1660 से हो सकती है. राइट, यही मैं कहने वाली थी. चलो कोई बात नहीं. Okay, so this is the case. Write down the observation. ये landmark है. So the Honorable Supreme Court observed that in the course of proceedings, if the plaintiff comes to know, in the course of proceedings, if the plaintiff comes to know that he will succeed in the suit filed for declaration of title, comma, he will have to amend his pleading. And ask for further relief if any, in order to get a relief of declaration. Done? Sorry. Okay, proceeding further. Write down the next case. This is State of MP versus Mangilal Sharma. This is 98 Supreme Court. 98 Supreme Court. अब यहाँ पे let's just see the situation. Number 1, सबसे पहले यहाँ पे the person he filed a suit for declaration under section 34.
that his services have been wrongly terminated. Government ने उसकी services जो हैं वो wrongfully terminate कर दी हैं. He still fulfills the eligibility criteria. ठीक. अब यहाँ पे इस declaration के साथ he did not ask for any other relief. उसने कोई भी और relief नहीं मांगा. Other relief not sought. ठीक. तो जब ये कोर्ट ने डेक्लेरेटरी डिक्री पास कर दी तो तब उसने एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को कहा दैट नाउ आई हैव नॉट लाइक मैंने सैलरीज एरियाज जो थे मेरे सैलरी के वो नहीं मांगे अपने सूट फॉर डिक्लेरेशन के अंदर. तो क्या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ऐसा रिलीफ दे सकती है? नंबर 1 पॉइंट. द आंसर इज नो. यस बिल्कुल. इट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री. वी नो दैट. सो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो ऐसा कोई भी रिलीफ आपको नहीं दे सकती. तो कोई भी कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कभी भी नहीं दे सकती है इफ यू हैव नॉट आस्क्ड फॉर इट या वो मेन डिक्री का पार्ट नहीं बना है. दिस इज 1 पॉइंट. सूट फॉर डिक्लेरेशन जब उसने फाइल किया दैट आई शुड बी रीइंस्टेटेड या उसने कहा कि यू नो आई शुड बी डिक्लेयर कि मेरी जो टर्मिनेशन हुई थी दैट वाज रॉन्गफुल. ठीक है. ये रॉन्गफुल टर्मिनेशन हुई है. तो कोर्ट ने जब डिक्री पास कर दी कि यस ये रॉन्गफुल टर्मिनेशन हुई है प्लस ही स्टिल फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो क्योंकि ये डिक्री अगेंस्ट द गवर्नमेंट थी तो लुकिंग इनटू द सिचुएशन हियर गवर्नमेंट ने उस डिक्री को रिस्पेक्ट किया एंड द पर्सन वाज रीइंस्टेटेड. आई थिंक इससे क्या हो गया आपका पर्पस सॉल्व हो गया. दिस इज व्हाट यू वांटेड. डिक्लेरेशन आप लेके आए थे दैट आई वाज रॉन्गफुली टर्मिनेटेड from my services and moreover my services were wrongfully terminated and moreover I am still fulfilling the eligibility criteria. This is what the court said. And on the other hand government respected that order and the person was reinstated. Now अगर आपने एरियाज का रिलीफ अपने पहले सूट के अंदर नहीं मांगा तो फर्स्ट थिंग वी हैव डिसाइड कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट आपको कभी भी कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ नहीं दे सकता है इफ इट इज मिसिंग इन द मेन डिक्री. दिस इज 1 पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज क्या उस पर्सन के लिए जरूरी था अंडर सेक्शन 34 टू हैव आस्क्ड फॉर द अदर रिलीफ दैट इज फर्दर रिलीफ कि मुझे सैलरीज भी चाहिए या मुझे रीइंस्टेटमेंट भी चाहिए? द आंसर इज नो. इट वाज नॉट रिक्वायर्ड. व्हाई? बिकॉज द केस इज बीइंग कवर्ड अंडर पैरा 1. Are you able to get the point? So simpliciter ये एक सूट जो था वो मेंटेनेबल था and considering the para 1 the court passed the decree in that person's favor. On the other hand the Supreme Court held कि अगर आप बाद में कभी एरियर्स के लिए सूट फाइल करते हैं तो क्या वो वहां पे ऑर्डर 2 रूल 2 के अंदर बार हो सकता है? दैट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस बट दैट इज टोटली आउटसाइड द स्कोप ऑफ सेक्शन 34 का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है. हाँ जी. आई होप यू आर एबल टू गेट द पॉइंट. जी. एरियर्स के लिए अलग सूट फाइल हो सकता है बट दैट विल बी फॉर द रिकवरी ऑफ द एरियर्स. वो बार नहीं है या है दैट विल डिपेंड but obviously we are not going to make a decision based upon section 34. Is it clear now? ठीक है. पहले इसके बारे में लिखते हैं observation of the honorable Supreme Court. Let's write down few points here. Then we proceed further. Please write down. A suit, the court observed, please write down, the honorable Supreme Court observed that a suit for mere declaration to any legal character, a suit for mere declaration to any legal character is maintainable under section 34 SRA. It is maintainable under section 34 SRA even though it has been held that the section is not exhaustive. Though it has been held that the section is not exhaustive. There is a proviso
which bars any such declaration in a suit for declaration of title where the plaintiff being able to seek further relief omits to do so. Hanji, is it clear? Done? Continue writing further, things will be more clear. The Honorable Court observed that normally in a case like this, as I have told you the facts, the plaintiff when seeking relief of declaration that he continues to be in service would also seek consequential relief of reinstatement and arrears of salary. However, as per para 1 of 34, a mere declaratory suit is maintainable and plaintiff need not ask for any other further relief. Clear to everyone? Let me know. Done? Okay, proceeding further. Hanji Keshav, please go ahead. Proceeding further, write down one more case. Venkat Raja. I did not get it. Bulkit, can you elaborate what you're asking? Venkat Raja versus Vidyane. Okay, so I write this word in caps. DOURERA, नाम ही बहुत मुश्किल है. TJAPE, oh my god, RUMAL, 2013 Supreme Court. इतना ही ठीक है. वेंकट राजा वर्सेस विद्याने, 2013 Supreme Court.
Title fructified by adverse possession की declaration. Yes, that I have yes, I have derived the title by adverse possession and I have this fear that the other person, that is the true owner, is going to deny that fact. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. अगर आप अपनी तरफ से सामने से आके सूट फाइल करना चाहते हैं, यू वांट अ डिक्लेरेशन, तो हो सकता है. What is this Dorera? I don't know, Perumal. Sorry, Simran. I would have done that agar I would have known the true pronunciation. जी जी, राइट, बिल्कुल. हाँ जी, सॉरी केशव, डिड आई मिस समथिंग? जी केशव मैम, अगर एक रीइंस्टेटमेंट इधर कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है, then it means mere declaration won't bind the government to reinstate that person. Okay, the point is केशव, actually the Honorable Supreme Court discussed this at length. ठीक, I'll read the point अगर आपको confusion है. I'm just reading, see if it suits your doubt. The court further said, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए इसको. Once the government servant is appointed to his post or office, he acquires the status and his rights and obligations are no longer determined by the consent of the parties, but by statute or statutory rules which may be framed by the government. ठीक है? The respondent did not ask for the reinstatement. The court gave a reason for that. That government, not being a private employer, would certainly respect a mere degree of declaration. ठीक है केशव, आंसर. अगर वो, क्योंकि दूसरी पार्टी गवर्नमेंट थी, तो अगर आपने साफ साफ सीधा रीइंस्टेटमेंट का भी रिलीफ नहीं मांगा, बिकॉज द अदर पार्टी वाज नॉट अ प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं था, तो गवर्नमेंट जो है वो उसको ऑटोमेटिकली ऑनर करेगी कोर्ट के डिसीजन को. सो देयरफॉर इट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द गवर्नमेंट दैट अ मियर डिक्री, सिर्फ एक डिक्लेरेशन की जो डिक्री पास हुई है, वो गवर्नमेंट उसको भी ऑनर करेगी. और अगर गवर्नमेंट ने उसको ऑनर करके आपको दोबारा आपकी सर्विसेज के अंदर जो है वो रख लिया, एज एन रीइंस्टेट ही कर दिया, वही होता है इन इफेक्ट. तो दैट्स परफेक्टली फाइन, दिस इज ऑल व्हाट यू वांटेड. रही बात एरियर्स की, वो अगर आपने नहीं भी मांगे हैं, यू कैन फाइल अनदर सूट फॉर दैट, बट दैट विल डिपेंड कि वो बार है या नहीं है. वो 34 के अंदर मियर डिक्री भी पास हो सकती है, डिक्लेरेशन भी पास हो सकती है. वो ऑर्डर टू रूल टू अप्लाई होगा या नहीं, डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस. ठीक है? हाँ, दिस इज व्हाट द कोर्ट ऑब्जर्व्ड. ठीक है? हाँ जी, तो बना लिया आपने शॉर्ट फॉर्म. ये डोरे मी लग रहा है मुझे, डोरे राजा पेरुमल. ओके, राजा बेटा. हाँ, बहुत ज्यादा. Ma'am, if I am filing suit for declaration of title in section 9, is court also under obligation to not make declaration until amended for further relief under section 34? Okay, again, Satish, if you're filing a suit for declaration of title under section 9, okay, is court also under obligation to not make declaration under amended? नहीं सतीश, यही मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बताया. सेक्शन 34 के अंदर आ रहे हैं तो सिर्फ एक प्रोवाइजो आता है आपके हाथ में, एज एन जब भी आप टाइटल के लिए कोई सूट फाइल करते हैं तो वहां पे कोर्ट देखेगा वेदर यू आर एंटाइटल्ड टू फर्दर रिलीफ और नॉट. फर्दर रिलीफ पोजेशन के फॉर्म में हो सकता है, इंजंक्शन के फॉर्म में हो सकता है. बट अगर आप सेक्शन 9 के अंदर हैं तो फिर वो सब अप्लाई होगा कि कोई पहला सूट तो नहीं आपने फाइल किया था जिसके अंदर ये मैटर जो है वो अब रेस जुडिकाटा ना हो, एज इन उसके ऊपर ऑर्डर टू रूल ना अप्लाई करता हो. क्या आप मांग सकते थे या नहीं मांग सकते थे? फॉर एग्जाम्पल 9 के अंदर यू हैव जस्ट फाइल्ड अ डिक्लेरेटरी सूट, तो हो सकता है आपको डिक्री मिल रही है उसके अंदर, बट अगेन उसके बाद उसी डिक्लेरेटरी सूट के अंदर देयर वाज वन रिलीफ व्हिच वाज ऑलरेडी अवेलेबल टू यू, तो फिर वो सेकंड सूट बाद हो जाएगा. कंस्ट्रक्टिवली वो आप मांग सकते थे, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, आपको पता था उस टाइम पे रिलीफ का, जानबूझ के यू हैव नॉट आस्क्ड फॉर इट. नाउ द कोर्ट इज नॉट गोइंग टू गिव यू फर्दर रिलीफ. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है? बट 34 ओनली अप्लाइज इन द केस ऑफ, 34 का प्रोवाइजो ओनली अप्लाइज इन द केस ऑफ डिक्लेरेटरी जब सूट होता है व्हेन टाइटल इज इन्वॉल्व्ड. सेक्शन 9 जनरली कहीं पे भी अप्लाई करेगा.
ठीक है? Clear, Satish? It's not exhaustive, not at all. Right, definitely. Would be grounds of attacks or defense, right? Clear? Okay. Proceeding further. एक और केस लिखते हैं. You have written this, write down the observation part. The apex court held that a suit for declaration of title without claiming further relief of possession is not maintainable. The apex court held that a suit for declaration without claiming further relief of possession is not maintainable. The following points may be noted in this regard. Number 1. The following points may be noted in this regard. Number 1. A declaratory decree containing declaration as to the title of ownership of property in case no relief of possession was claimed, I'm really sorry, can you just cut out this sentence? Please आप cut कर दीजिए. I'll make you rewrite it. Let it be. ठीक है, please इसको cut कर दीजिए. The following points may be noted. Write down the first point. Okay. If the plaintiff, yes, write down the first point afresh. If the plaintiff, comma, admittedly out of possession, comma, if the plaintiff admittedly out of possession, comma, files a suit for declaration, simpliciter with regard to the title of property without claiming the further relief of possession. The suit is liable to be dismissed. In view of proviso to section 34. हाँ जी, I hope this is clear now. तो अगर plaintiff out of possession था, मतलब अगर उसके पास possession नहीं थी, and he has filed a suit for declaration, तो उसके साथ possession मांगना जरूरी है, otherwise your suit will be dismissed. Right. Next is, continue writing the same point. However, there are two exceptions.
However, there are two exceptions. Number one, we're writing the exceptions. Where the defendant was not in physical possession, where the defendant was not in physical possession, number two, where the parties are co-sharers, of the suit property, comma, a co-sharer can maintain simpliciter suit for declaration of title against the other co-sharer because possession of one co-sharer is possession of all. I repeat, where the parties are co-sharers of the suit property, a co-sharer can maintain simpliciter suit for declaration of title against the other co-sharer because possession of one co-sharer is possession of all. Subsequently, he can seek the relief of possession and separate possession. Okay, now let me know that आपको एक्सेप्शन समझ आई या नहीं आई. सबसे पहले हमने लिखा कि प्लेंटिफ जो है अगर उसके पास प्रॉपर्टी की पोजेशन नहीं थी और उसने सूट फाइल किया है फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, तो एज पर द प्रोवाइजो यू नीड टू आस्क पोजेशन ऑल्सो, नहीं तो यू विल नॉट गेट अ डिक्लेरेशन. यही है, आपका सूट डिसमिस हो जाएगा. दिस इज वन पॉइंट. सो वी आर सेइंग बट देयर आर टू एक्सेप्शंस हियर. एक्सेप्शन नंबर वन, जब डिफेंडेंट के पास खुद पोजेशन नहीं है जिसके अगेंस्ट आपने डिक्लेरेशन का सूट फाइल किया है टाइटल के बेसिस के ऊपर, अगर उसके पास खुद ही पोजेशन नहीं है तो आप क्या पोजेशन मांगेंगे इस पर्सन से? नो, देयर इज नो नीड फॉर आस्किंग द पोजेशन. यू आर जस्ट कॉन्टेस्टिंग द सूट on the basis of your title. I give you one example. So suppose there is one person A, the owner of the property. He has leased out his property to B, जो tenant है. अब B के साथ कोई झगड़ा नहीं है A का, but there is one person C who's saying that it is he who's the owner of the property and not A. अब A का झगड़ा C के साथ है because उसको लग रहा है कि ये मेरा टाइटल डिनाई कर रहा है. सी कह रहा है कि आपके फादर ने तो प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट कर दी थी, हाउ कम यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. तो ए इज गोइंग टू फाइल अ सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द टाइटल अगेंस्ट सी ओनली बिकॉज ही इज द वन हु इज डिनाइंग द टाइटल. बट इसके पास खुद पोजेशन नहीं है, तो क्या आपको पोजेशन मांगने की जरूरत है? नो, नॉट एट ऑल. तो क्या ये सूट सिंप्लिसिटर विद रिस्पेक्ट टू टाइटल self maintainable है? Yes, it will cover under para 1. You are not entitled to any further relief, so you need not ask that further relief. Are you able to get the point now? अब ठीक है everyone? Okay, now let's see the another exception. So there are two owners of the property, A and B, co-owners. So if we are saying that even if B has the possession, B के पास possession है, so a possession of one owner is deemed as the possession of the another owner. यही होता है, ठीक है. अगर एक के पास possession है तो मतलब दूसरे के पास possession है. But if B is denying the title of A, B कह रहा है कि आपको owner है ही नहीं, तो क्या अब A सूट फाइल कर सकता है for declaration? Yes, कर सकता है. पर यहाँ पे उसको possession मांगने की जरूरत है नहीं, because declaration क्या आएगी that you are the co-owner. और हम मांग रहे हैं कि पोजेशन तो इसके पास ऑलरेडी है ही.
ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पोजेशन नहीं भी मांगेंगे, सिंप्लिसिटर एक सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल will be maintainable. Is it clear to everyone? Let me know. Done? Alright, so we'll continue. Declaration कल खत्म हो जाएगा, dictation भी complete हो जाएगी, and we'll start with injunctions. Last topic. Right. Then it would have been. बिल्कुल. फिर तो आप अपनी मतलब you are denying the. वैसे भी वो अगर टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड का टाइटल डिनाई कर रहा है तो this is a kind of a, I mean eviction का भी आपकी ग्राउंड बन जाती है. राइट बिल्कुल. तमन्ना द पॉइंट इज दैट यहाँ पे स्कोप थोड़ा कम है, 34 का स्कोप कम है, नॉट वाइडर इनफ. लीगल कैरेक्टर होना चाहिए, कोई राइट टू प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होना चाहिए, तो नैरो स्कोप है. 9 के अंदर बहुत वाइडर स्कोप है. ठीक है, कोई भी डिक्लेरेशन हो सकती है. जी मैम, हाउ द कोर्ट विल कंक्लूड द पॉइंट ऑफ टाइम कि अब उससे लग जाना चाहिए कि अमेंडमेंट इज नेसेसरी. और ओके, वी विल राइट अबाउट इट सतीश. ये पॉइंट हम कल करने वाले हैं, तो केस लॉज है, आई विल डिक्टेट, थिंग्स विल बी वेरी क्लियर. ठीक है, जैसे आपको ये फर्दर रिलीफ का हो गया ना, वो भी क्लियर आउट हो जाएगा. तो दिस वाज जस्ट वन जजमेंट व्हिच इज कंसिडर्ड एज लैंडमार्क, तो मैंने आपको लिखवाया, एंड एवरी एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स दिस जजमेंट, क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यही हाईलाइट किया दैट हाउ दिस विल बी प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्या अमेंडमेंट अलाउ की जाएगी या नहीं की जाएगी. दिस इज द थिंग. ठीक है, बट यू जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड सतीश, इफ यू आर आउट ऑफ पोजेशन, पोजेशन प्रॉपर्टी की है ही नहीं है, एंड यू आर फाइटिंग फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, whether this is expected out of you that you will include the relief of possession in the very beginning of the claim, the answer is yes. This is what the court expects from you. But if you have not included it, बाद में भी include कर लीजिए, कोई problem नहीं है. If a party sued for declaration, then possession to defendant, relief है ना. Possession to, I didn't get it. वो नहीं समझ नहीं. The very reason कि पैरा 1 के अंदर कहा गया that declaratory suit के साथ relief मांगने की जरूरत नहीं है, because sometimes what happen is that your reliefs are based upon the declaration itself. Got it केशव? ठीक है, आपके further relief declaration के ऊपर ही based होते हैं कि ये आपके फेवर में declaration आएगी या नहीं आएगी. So therefore पैरा 1 says that आपको कुछ भी और साथ में मांगने की जरूरत नहीं है. तो तभी जैसे मैंने इस केस के अंदर जो लास्ट में लिखवाया, तो मैंने लिखवाया ना, सब्सिक्वेंटली ही में आस्क फॉर सेपरेट पोजेशन. आई यू एबल टू गेट द पॉइंट. बस एक चीज के अंदर एक्सेप्शन है, जहां पे वो डिक्लेरेशन फॉर टाइटल था, उसके साथ आपको फर्दर रिलीफ मांगना पड़ेगा. दिस इज द ओनली थिंग. बाकी केसेस के अंदर बिकॉज डिक्लेरेशन के साथ ही फर्दर रिलीफ आपके जुड़े हुए हैं, दे आर डिपेंडेंट. पहले आपको एक चीज मिलेगी तभी आप दूसरी चीज मांगेंगे ना, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको दूसरा सब्सिक्वेंट सूट अलाउ किया जाता है. दिस इज द ओनली रीजन. ठीक है, ओके, ऑल राइट. सो आई सी यू टुमारो एवरीवन. हाँ जी, पीएचडी स्टार्ट, कौन सी पीएचडी, अब कौन सी पीएचडी. ऐसा भी हो सकता है